सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव हमेशा की तरह, और आप देख ही चुके हैं मेरे साथ आज कौन है। दी इनक्रेडिबल फीमेल प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हु हैज अ यूनिक स्टाइल ऑफ अ स्टोरी टेलिंग। वो हमको हमेशा इंस्पायर करता है। मैं जब भी ऑडियंस की बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड उनको इंस्पायर करता है, बिकॉज शी हैज सम डिफरेंट सिनेमैटिक स्किल्स इन हर। वेरी ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, गॉर्जियस किरण राव। किरण, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you, Namita. What a lovely intro. Oh, thank you so much. I feel honored today because I am sitting across next to you, और मैं तो आपको देखने से मेरी नजरें नहीं हट रही because I love your hairstyle. Oh, thanks. मेरा हाँ काफी अलग यूनिक हेयर स्टाइल तो जरूर है, फिल्म मेकर की बात I don't know. और आप खुद भी यूनिक है ना, इसलिए भी तो. Thank you. And that like you have come up with लापता लेडीज. पहले तो मुझे टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा. फिल्म हालांकि मैंने देख लिया, स्पॉयलर्स नहीं देने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें जो मैं जानना चाहती हूँ. I was really curious to know about how did you do it. तो पहले तो ये बताओ, ये वो कहते हैं ना उस लैंग्वेज में, ये हो क्या रहा है, दुल्हन एक्सचेंज हो रही है, कैसे चल पाएगा? हाँ एक्चुअली आमिर को ये जब कहानी मिली थी स्क्रिप्ट राइटिंग के कंपटीशन में, तो आई थिंक उनको जब कहानी अच्छी लगी, यानी केमो मैन टोल्ड मी कि ट्रेन में ऐसा होता है कि ये दो औरतें अदला बदली हो जाती है उनकी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा कैसे? व्हाट अ अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो हुक तो एक करेक्ट बैठता है कहानी का कि आपको वन लाइन में मैं सुना दूं तो आपको ये एक्चुअली एक तरह से क्यूरियोसिटी पैदा करेगी कि क्या होने वाला है, कैसे होता है ये। तो वो तो था, और फिर हमने बिप्लब गोस्वामी जिन्होंने कहानी लिखी उनसे ली, उसको डेवलप किया, और फिर ये टाइटल जो कि एक्चुअली इट्स मोर देन जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकली लॉस्ट, वो मेरे प्रोड्यूसर का आइडिया था, लापता लेडीज। ये फिल्म में हर वक्त लेडीज को लेडीज बोलते हैं, तो हिंदी में आपको लेडीज विदाउट द नुक्ता दिखेगा। तो हाँ, ये कहानी बहुत मजेदार है, रोमांचक है। आपने देखी हुई है तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो वी वर्क टू मेक इट फन। द आइडिया कि सबको मजा आना चाहिए, थोड़े आइडियाज को, थोड़े हमारे जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो भी हम लोग साथ साथ बोलते जाएंगे। एब्सोल्युटली। और मुझको तो सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी जो टचिंग बात लगी कि सिंपल स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुली वीव किया गया है, लेकिन येट वेरी वेरी इफेक्टिव। जब हम एंड तक पहुंचते हैं तो हमारे दिल को छू जाती है कहानी, विच मुझे लगता है एक एसेंस होता है किसी भी स्टोरी का या कंटेंट का, जिस तरीके से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसको पेश करना चाहते हैं। नाउ कास्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ ना किरण, तो बहुत अलग है। इट्स नॉट दैट स्टारी वाला अफेयर कि आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं, स्टार फैक्टर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टोरी में। मतलब इवन इफ वी सी फूल द गर्ल प्लेइंग दैट, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 15 साल की थी जब शूट कर रही थी, और उनको देख के भी लगता है कि वो बहुत छोटी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्लेइंग सच कैरेक्टर, इवन दिस गर्ल प्रतिभा, इवन स्पर्श इफ वी सी हिम, बहुत अलग कैरेक्टर कास्टिंग है। सो व्हाट वर यू लुकिंग फॉर एग्जैक्टली इन योर एक्टर्स? आई ऑनेस्टली जब कहानी हमें मिली, ये इट्स रूटेड इन रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। कास्टिंग हमें उस हिसाब से करना था कि 20 साल पहले जो लड़कियां विलेज की हैं, फिजिकली रियल लगनी चाहिए, कि दे आर नॉट सम सिटी गर्ल्स जो अपने कलर्ड है वाले, वेरी मॉडर्न लड़कियां नहीं है। तो एक तरह से एक मासूमियत है जो फूल के चेहरे में, वो या तो जो इंटेलिजेंस है प्रतिभा के चेहरे में, वो ऑर्गेनिकली मुझे फेसेस से चाहिए था कि आप देखते ही आपको पता चलेगा उनका कैरेक्टर रफली क्या है। और अगर हम स्टार्स लेते इस रोल में तो बहुत मुश्किल होता कि हम आपको सरप्राइज कर पाए। आपको शायद एंड थोड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा, जैसे हमने टुवर्ड्स द एंड गए और आपको पूरी कहानी का पता चलता है कि क्या क्या है, तो उस हिसाब से हम शायद सरप्राइज ना कर पाते विथ स्टार्स। सो द आइडिया रियली वाज, can we find, India is full of talent. We have so many young people, middle-aged people, older people, all who are interested in doing different work. तो जब मेरे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल ने शुरू की, वी सेड लाइक स्प्रेड द नेट फार एंड वाइड। एक बात ये थी कि वी वांटेड द लैंग्वेज टू बी भोजपुरी हिंदी, तो वी न्यू दैट उनको लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, द एक्सेंट वाइज वी वुड हैव टू वर्क to get them to the same kind of distinct dialect. लेकिन उसके अलावा we were like, go for it, get us people from everywhere, you know. Yeah, so we saw lots of tapes, and Pratibha actually
काफी एंड में मिली हमको। अच्छा। जाके some of the last rounds of casting, we got her tape and we absolutely loved her performance and you know हम लोग आमिर को भी actually as a producer वो रिस्क तो लेते ही हैं हर बार, और उनको he was very much on board with me कि भाई इसमें हम लोगों को फ्रेश फेसेस लेने चाहिए, लोग जो बहुत बिलीवेबल हों, आपको लगे कि हाँ ये निर्मल प्रदेश, you know, ये जो पतीला, पतीला, ये तो फिक्शनलाइज है पतीला, but this is really interesting, no? So all these, you know, kind of interesting characters जो आपको कहानी देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद आपको याद आए, कैरेक्टर्स की कहानियां। तो अच्छा, रवि तो पहले ही दिमाग में होंगे ना, रवि तो इज वन सच लाइक नेम इन भोजपुरी इंडस्ट्री। Honestly, Amir was very keen to play this role, but we both agreed that कोई चाहिए था जो एक तो बहुत उम्दा एक्टर हो, वो तो है ही, पर ऑल्सो आपको सस्पेंस में रखे अंत तक कि वो कैसे आदमी है, लाइक व्हाट इज दिस कैरेक्टर, यू नो। और रवि जी, he was the first only other name I thought of, you know, like Amir, we both decided कि you should not be in the film। अच्छा। हाँ, because you know आमिर के साथ एक तरह से एक्सपेक्टेशन हो ही जाता है कि of course he's a सुपरस्टार है, तो कुछ ना, हालांकि बहुत सारे ज्यादा लोग शायद देखें क्योंकि आमिर है इसमें, so it's a big advantage for a film, but as a producer he himself also felt like हाँ we should cast someone who can take you on this suspense journey of suspense, you know। So Ravi ji was the only other person I thought of, honestly, and I was so happy I went to Delhi to narrate to him। वो दिल्ली में थे और हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं उनको अच्छी लगेगी। He was so generous and so he loved the story। He just turned around and said हम तो करेंगे, अरे वाह, कब करना है। Yeah, he was absolutely on board and loved the role। Obviously, it's a role that no actor would not love, honestly। So he absolutely loved the role and he nailed it। मतलब absolutely, हाँ, उनको करने में जो वो दिलचस्पी लेके कर रहे थे वो पता चलता है। मतलब वो तो दिलचस्पी ले रहे थे, साथ में ऑडियंस जो देख रही थी वो भी दिलचस्पी ले रही थी उनमें, है ना, और बाकी सब कैरेक्टर्स में भी। इवन आपने कुछ स्पेसिफिकली अपने एक्टर्स को रेफरेंस लेने के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक मूवीज या प्रोजेक्ट्स देखने के लिए बोला कि उनको इस तरह से आगे बढ़ना है या ये उनमें होना ही चाहिए? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन रिहर्सल्स काफी किए इसी कमरे में, वर्कशॉप्स किए हमने। रेलवे ट्रेन का ऐसे डब्बे जैसे दो यू नो बेंचेस डाले थे जहाँ आप बैठी हैं और जहाँ हम बैठे हैं और ये सब किया हम लोगों ने। यू नो अलग अलग ग्रुप्स में किया क्योंकि आपको जैसे स्टेशन पे जो एक ग्रुप है उनके साथ एक घर पे या पुलिस स्टेशन वाले, तो रवि जी भी थे फॉर सम रीडिंग्स। वी हैड क्वाइट अ फ्यू वीक्स ऑफ रिहर्सल्स, क्योंकि कॉमेडी में ये बात होती है कि लोगों का पिच बहुत जरूरी है। आप बहुत ही स्लैपस्टिक बड़ा कॉमेडी कर रहे हैं कि बहुत ही सटल, हमको रियलिज्म की कॉमेडी चाहिए थी कि एक्चुअली भाई देखने जाए तो ये कहानी बहुत डरावनी भी हो सकती है कि लड़की खो गई है, कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, यू नो। बट वी वांटेड एवरीबडी, इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी, तो उनका दर्द मैं छोटा नहीं करना चाहती। ये लड़का अपने बीवी को बहुत यू नो इतना वो वरिड है, इतना उसको डर लग रहा है, लेकिन उसमें ह्यूमर भी एक तरह से है। तो कैसे यू नो हाउ डू यू वर्क ऑल दीज लेयर्स। तो द पिच वाज इम्पोर्टेंट फॉर कॉमेडी। आई फील दैट टू गेट एवरीबडी टू द सेम लेवल ऑफ पिच वेयर योर it's kind of it's dry, it's you know it's not like ki we are playing dramatically theatrically, तो realistically खेलना, लेकिन उसमें ना जूस करना मोमेंट को। करेक्ट, हाँ, वो तड़का लगाना बहुत important है। Luckily I had some excellent actors, so तो दो लड़कियां तो हैं ही, पर स्पर्श इतने अच्छे एक्टर हैं। मैं हर बार फिल्म देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई he is literally a one take actor, you know, he is so good। I used to make him do things just कि कुछ और कर ले भाई। अच्छा, improvisation, you allow the actors to do improv। Yeah, because I just wanted to see him perform। He's one of those who you enjoy just watching perform। So he gets it very quickly what the director wants। तो उसके बाद you're like अरे मजा आ गया, कुछ और कर ले, you know। तो मजा बहुत आया हम लोगों को। अच्छा, इवन मैं ये भी जानना चाहूंगी एज अ डायरेक्टर या एज अ पर्सन भी, मुझे हमेशा से लगता है किरण इज वेरी ऑब्जर्वेंट, है ना। तो आपके Gen 1 में या Gen 2 में, मतलब Gen 1 इज लाइक आपकी अपनी कोई मेमोरी में या आपके परसेप्शन में आपने कभी ऐसा कुछ होता हुआ देखा है किसी गांव में या कहीं पर भी?
Not really. हाँ. I mean, मैंने हमारी I feel हमारे देश में हाँ. व्यंग या satire हाँ. बहुत common है. True हम that. लोगों के we are used to you know the craziest things. हम लोग we don't bat an eyelid. हाँ. कि which you know foreigners come to India and they're like, oh my God, there's like a whatever, there's an elephant on the road. मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीजें बहुत नॉर्मल हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है you know कुछ भी हो सकता है यहाँ which I enjoy a lot you know because we have a great actually capacity for humor नहीं तो हम लोग ऐसे यहाँ तक पहुँचते कैसे कि हम लोग we are country of so many different kinds of people so many cultures we go from one place to the other you know life changes language changes everything changes we are used to and we shop for life every second day, no? Every second day. So it's actually a place where satire and comedy I feel can very well be situated. So though I haven't experienced it or you know heard of it, but often you pick up the newspaper and you're like, यार ये क्या कहानी है? कैसे हो सकता है? You know? तो खुद तो पर्सनली मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है लेकिन ऐसे होता तो होगा और ये घूंघट वाला एंड ऑल दैट ये तो हमने देखा ही बिकॉज़ इंडिया इज एक्चुअली व्हाट वी सी इन द रूरल एरियाज वो है ही नहीं जो हम अभी बॉम्बे में या दिल्ली में या मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं सो दिस इज द ब्यूटी हां एंड एज यू कैन सी घूंघट की बिल्कुल निंदा नहीं है इसमें बिल्कुल नहीं है हां द आईडिया इज प्लीज पहनिए और जो भी है लेकिन इट्स अ डिवाइस वो एक मेटाफर जैसा सिंबल जैसा हो जाता है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं कितना अपनी पोटेंशियल हम फुलफिल कर पाते हैं यू नो इट्स अबाउट दैट इट्स अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ इट्स नॉट अबाउट कि अरे यू नो फिजिकली कि आप पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं इसकी बात तो है नहीं Even the representation of women I liked in the movie, Manju Mai's character, played by Chaya Kadam, if I'm not wrong. Very empowered woman, है ना जो I mean फूल को अपने टी स्टॉल पे रुकने देती है and then she makes her understand about the fraudulent activities being done. So वो किरदार छोटा किरदार है लेकिन very effective, very powerful. तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये भी होना चाहिए? Actually ओरिजिनल स्टोरी में थी नहीं ये कैरेक्टर. So this is actually मंजू माई का कैरेक्टर एक है जो मैंने in some ways प्लांट किया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लगती हैं कि हम कहते नहीं है like you know we don't have a character who says calls out through that various things you know तो I had this in my mind I was like because original story में फूल एक very sweet old couple के घर में रहती है तो उनका कुछ इतना उस पे असर होता नहीं impact नहीं होता है that they take care of her तो I thought यार we need some woman who also kind of you know is different than all these women and can prove that there is another successful way of living your life it's not like everybody has to do the same things you know आप अपना भी path ढूंढ के आप you can be happy तो Sneha and I discussed it a lot and I told her that this is the kind of character I want to build तो Sneha is the writer of the screenplay so she also was like ha it sounds great or so she with her skill as a writer created this character but yeah so originally Manju Mai didn't exist and she's my pet character like your invention basically yeah in a sense अच्छी बात है इवन एज इन मैं बाकी भी फीमेल्स की बात करती हूँ यू योरसेल्फ आर अ फीमेल सो व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक व्हेन अ वुमन इज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ डिफरेंट वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी डू यू फील सो I do think that women's perspectives are different and come from a place perhaps that men would not be able to access because it's of just having said that of course so many men make very very complex women characters interesting women characters but I feel it's important for women to tell their stories and देखने जाएं तो हमारी तादाद in the screenwriting numbers या तो filmmaking numbers are still very small और अगर आपको एक्चुअली वुमेन औरतों की कहानी जाननी है औरतों का पर्सपेक्टिव जानना है तो और औरतों को आनी पड़ेगी इन द इंडस्ट्री एंड टेल देयर स्टोरीज एंड आई डू थिंक देयर इज अ ह्यूज dirt of the perspective of women of queer people of trans people of people from other you know diverse backgrounds economically diverse castes we need all these stories to come into the you know mainstream ताकि ये unusual ना हो
ये हमारी we are half the population of the country, women. Absolutely. We should be at least half the population of the film world, you know, or of any sector. We are a very minuscule part still. So you know, I think it's important to be mindful and to include more, you know, women, more people from other backgrounds into our industries. Absolutely. अच्छा, as a director या as a filmmaker अगर मैं देखती हूँ तो there is a way to make a balance between your storytelling and you can put that societal issues and the issues that being faced by the society. उसको उसमें balance बनाना बहुत जरूरी होता है. And you have made it like you have weaved it so beautifully. How did you do that in the film? हाँ, तो ये एक्चुअली स्नेहा का कमाल है, रियली एज अ राइटर. बिप्लब ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, लेकिन उसमें एक तरह से द इश्यूज वर मोर एट द फोरफ्रंट एंड इट वाज वेरी लवली स्टोरी, बट थोड़ा रियलिस्टिक एंड इशू बेस्ड था. Yes. So I was very clear that I wanted to make it fun, and I wanted it to be a comedy or something that people kind of can listen. These ideas are not right on the front of the story is not about these ideas, at least not openly, like not. So I wanted to a little bit layer it with some more conversations, more ideas. And I feel comedy एक जरिया है जो आप लोगों को हंसते हंसते आप बहुत कुछ कह सकते हैं, यू नो. जो अगर हम खड़े होके पोडियम पे स्पीच दें तो हम शायद रुलाएं आपको, लेकिन आपको थोड़ा लगता है कि यू आर बीइंग पेट्रोनाइज्ड, यू नो, लाइक कोई मुझे क्यों समझा रहा है यार, तुमको पता है. और ऑनेस्टली हम जो कह रहे हैं इस फिल्म में सबको पता है, बहुत लाइट वे में कह दिया गया. हाँ, और ये ऐसे ये सारे मुद्दे ऑलरेडी कितनी बातें हो गई हैं इस पर, कितनी चर्चा होती रहती है इन मुद्दों पे. ये नए मुद्दे नहीं है, तो कैसे हम नए बनाएं. बट कई बार इस मुद्दे को लेकर आना, हाईलाइट करना बहुत हैवी वे में हो जाता है, आपने बहुत लाइट वे में. करेक्ट. तो कैसे इसको फिर से फ्रेश बनाएं, कैसे इन सम वे आइडिया स्पार्क करें जो एक्शनेबल हो. ये है कि हम लोग खड़े होके बहुत सारे लेक्चर्स दे सकते हैं, बट आई वांट वुमेन एंड जस्ट सोसाइटी इन जनरल टू फील लाइक या वी कैन डू दिस इवन स्टेइंग विद इन वेयर वी आर. ये नहीं है कि रिबेलियन करके हम लोग रेवोल्यूशन स्ट्रीट पे ले जाएं, शायद वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं जो आपको मेक यू हैप्पी, मेक यू फुलफिल्ड, मेक यू फाइंड स्पेस विद इन योर ओन मैरिज, योर ओन फैमिली, योर ओन सोसाइटी और कम्युनिटी. तो ये छोटी बातें अगर कोई यू नो जाते जाते आपको एक आइडिया दे दे तो फिर आई फील इट्स टेकन बेटर. पीपल फील लेस प्रेशर्ड टू हाँ आई एम बीइंग जज्ड, you know. Instead I am being included. आपको क्या लगता है, please, you know, if there's something you want to take away you can, but if you just want to be entertained also, this film is just entertaining. But when you were making this film, so what did you want people should take away from this film? Honestly, I wanted people to take away that you know, it's possible and it's important that all of us find space for ourselves within our families, our homes, our communities, especially women, because we don't give ourselves space. We are so busy being nurturers for our families or you know, children, as husband, community. अपने बारे में कम सोचती हैं औरतें. और if women can just give themselves a little more time, a little more love, a little more acceptance and understanding, and in some way I really want women to be able to assert themselves and ask for what they want. You know, आप please मांगिए. और मैं सबसे ये you know चाहूंगी कि सुने वो with an open mind and accept that you know women want to reach their best potential. उनको जगह दीजिए, उनको मौका दीजिए. So that's what I want people to take away really, you know. As a filmmaker we see that you are unique. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आपका स्टोरी टेलिंग का अंदाज भी अलग है, डिफरेंट है. और बाकियों से अगर मैं बात करती हूँ, what kind of cinema you love watching, Kiran? Actually I love comedies. मुझे comedies बहुत पसंद है. I love romance. Oh wow, that's nice. I enjoy romantic comedies. I enjoy romance. मैं बहुत violence नहीं देख पाती हूँ. थोड़ा अभी मेरा threshold ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी I'm not a huge fan of action and violence so much. But I love science fiction. Oh wow. हाँ, तो genres में I like almost everything. I can't watch
high suspense, Okay. especially if there are children involved. मुझे बच्चों के साथ जो stress मुझे अच्छा नहीं लगता. I find it very difficult to watch children in difficult situations. Maybe because of being a mom or just in general. I didn't find this so much before I had a child. But once you become a parent, it's kind of very difficult to see children go through a tough time, you know. But yeah, I enjoy fairly light and mindless stuff also I love. कभी-कभी है ना? Enjoy, like really love. एक शख्स के साथ इतना टाइम रहते हो बिता देते हो, आमिर के साथ है ना, सो कुछ सिमिलैरिटीज भी आने लगती है. मैंने सुना है कि हस्बैंड वाइफ का चेहरा तो मिलने लगता ही है, उनकी आदतें भी मिलने लगती हैं, नहीं? चेहरा, it will be like quite interesting to think for Amir to think that he looks like me, but हाँ, ideas तो 100% कुछ time बाद, you know, you begin to perhaps even sound the same. You know, inflection, Amir के certain ways of speaking है. Correct. जो sometimes I've stopped and been like, I sound exactly like him. होता तो है. When you rub off on each other, especially creatively, हम लोग इतना closely जब काम करते हैं तो एक तरह से लोगों को लगता होगा कि how are they so similar in the ideas that they have, you know. But I think that's what drew us to each other in the beginning. We both from the film world, but we both are interested in a certain kind of story. We both, I think, I don't know, ethically and just creatively we are on the same plane. We are interested to do the same kind of work. तो उस हिसाब से we are very similar. अच्छा, आप तो कोलकाता से ही हो ना? मैं सोच रही थी आज जब आपके पास मैं आई थी कि कोलकाता से जुड़ी हुई स्टोरी किरण की हमने, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि आपने कोई बनाई. You're working on that one, right? I am actually. I have a couple of stories, not just one. एक web series kind of है जो it's stretched across 3 generations of women from Calcutta and Darjeeling. Okay. There's another period story which is kind of a love story set in rural Bengal. Very nice. तो बहुत सारी मेरी कहानियां हैं जो set है वहाँ, and I'm waiting to go back, you know. 18 साल तक बचपन से लेके when I finished school, I grew up in Calcutta. Oh wow, that's nice. Yeah, rural India से ज़्यादा लगाव है आपको, है ना? हाँ, I mean rural India only because I mean city से भी बहुत लगाव है. I think Calcutta as a city is a very interesting place. And देखा है हम लोगों ने ज़्यादा काफी, but not enough really. No, I love, there are so many interesting places in this country. I would love to make a film in the mountains because the mountains are my favorite place. The Himalayas are the most beautiful place on the planet. That is a fact. So I would love to set something in a vast Himalayas. There's so many regions. So one of these stories, like I said, is set in Darjeeling. It's called Kanchenjunga. But yeah, this country is, you know, what do we not have? You know, as not just as location, but just culturally, story-wise, क्या नहीं है आपको? और मतलब literally the morning newspaper is inspiration to make so many kinds of stories, because all kinds of things are happening, you know. So, but one thing, I'm sorry, I'm stopping in between. One thing I see in Bollywood these days or cinema these days, that there is a dearth of original content. What are your thoughts on that? Honestly, no. I feel like there's a lot of original stories that we are doing. I mean, if anything, it's kind of what used to be a big divide maybe between the South and the Hindi films and OTT and films, you know, like the Hindi film industry, that has flattened out a lot because we find now stories from, people are watching stories from Malayalam cinema. Correct. From Tamil cinema, Telugu cinema, Punjabi cinema, Gujarati. There are hits in all languages. There's I think more stories that are rooted coming from quite a few other languages. Not only regional, world cinema people are watching, right? We are watching films from every country in different languages. So I do think that, yeah, sure, adaptations are great from, we should, if we feel like the story is powerful, adapt it with a in a new milieu and all that. But India की भी काफी अलग-अलग कहानियां आ रही हैं if you actually look around. So I don't think, in fact, I feel like it's an opportunity for us as filmmakers. Audiences are ready for something that's original only. They're not looking for
the same stuff. The They get fact, bored of that. yeah, so दो action फिल्मों के बाद it's not necessarily the thing that oh 2-3 action फिल्में चल गई तो वही चलने वाली हैं. That's not really the case, and it's because we are spoiled for choice. You know, OTT भी है, कितनी सारी dubbed फिल्में आ रही हैं to watch in cinemas. I mean, the fact that we had a Korean film doing well called Past Lives, you have all kinds of other languages, films Even from other Japanese countries, cinema, Japanese cinema. films. Our young people are watching anime, and so it's actually, and I do think we are pushing ourselves to produce more interesting stuff. You know, the fact that 12th Fail did so well in a cinema is a great, you know, like it's a big inspiration for filmmakers, because you feel, wow, you know, like I can tell any kind of story, and the audience will come if the story is good, not because there's a star or there are 10 songs or anything. How it has been executed by the director, or what was the vision. Exactly. So one thing I love about you is like you're not just making cinema like with your broad thinking and the issues that you take up to the society, but yes, you are contributing to that. That's the best part about you. And thank you so much, Kiran, for being with us and talking so warmly on Punjab Kesari. My pleasure. Thank you for having me. Thank you. And thank you so much all of you for watching us. देखो बातों बातों में मैं ये तो कहना भूल ही गई. मिलते हैं आपसे अगली बार, और आप लापता लेडीज जरूर देखिएगा, which is releasing on 1st of March 2024, right? Yes. Thank you once again.